Now I'm going to start the chapter ray optics. रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक शुरू होता है रिफ्लेक्शन से। ये हम लोगों ने क्लास 9th में स्टडी किया था। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर हमारी कोई लाइट इस बाउंड्री पर पड़ती है, ये लाइट पड़ रही है। तो जिस पॉइंट पर लाइट पड़ती है वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं 90 डिग्री पर, जिसको नॉर्मल कहते हैं। और ये लाइट हमारे यहाँ पर पड़ रही है, तो इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। फिर क्या होती है, ये लाइट वापस इधर चली जाती है। तो ये लाइट इंसिडेंट रे यहाँ पर पड़ने के बाद इधर वापस चली जाती है, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नाउ there is an angle between normal and incident ray. We denote it by I. Now, there is also an angle between normal and reflected ray, that is R. And is termed as this I is termed as incidence angle. और अगर हम इसका definition लिखें, then angle between ये normal है और ये incident ray है, normal and incident ray. जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है उसको इंसिडेंस एंगल कहते हैं और इसको एंगल आई से डिनोट किया जाता है। इसी तरीके से ये एंगल आर है, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन, बी डब्ल्यू मतलब बिटवीन, नॉर्मल एंड ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। So listen carefully. For example, there is a boundary and a ray of light is incident on this boundary at a point, let P. Then it again reflects back to the same medium, and this path from which the light is reflected back, that is known as reflected ray. And the point at which the light is incident on this medium, we draw a line that was termed as normal. Clear? Now the angle between the normal and incident ray is denoted by I, and that I is known as angle of incidence. So what is the definition of angle of incidence? Angle between normal and incident ray. Angle between this normal and incident ray is known as angle of incidence. Similarly, the angle between reflected ray and normal is called reflected angle, or we also say that angle of reflection angle. Okay, now we see that light comes from this medium and again reflect back to the same medium. That means there is air and reflected light also goes into the air, it bounces back into the same medium. So what is reflection? I am going to describe you the definition of reflection. Have you noted? Just note it down. I'm done. Okay.
Now, what is reflection? Definition of reflection: when light travels from one medium to another, like when light falls on surface of a medium, it is, yeah, it bounces back to same medium. This phenomenon is called reflection. After that, laws of reflection. First law: incident ray, normal, and reflected ray all lie in same plane. Second law: angle of incidence is equal to angle of reflection. That is, angle I is equals to angle. Now, here the topic of reflection is covered. After that, there's another topic: spherical mirror. Have you finished? Yes, sir. Yeah. Next topic is spherical mirror. As it is obvious, this is a spherical mirror. These are all two in this way, two types of mirror. Here, there are generally two types of mirror. This is concave mirror and this is convex mirror. Okay, this means this is painted over here. Now, after that, I'm going to explain you some different terms regarding this. For example, we have a circle like this, and always in a circle there is a center.
with the help of which we made a circle. Okay. Now, if we draw a line from here and if we remove this portion of the circle, then there you can see this is a type of mirror. Okay. At this point where it touches, we can term it as pole, that is P. And this line, which goes from center to the pole, this is known as principal axis. Clear? And the half of the pole and this point C, this is known as center of curvature. Okay? And this point is known as pole. And the half of pole and center of curvature, we have another point that was F and it is termed as focus. Okay. For example, this is 8 centimeter. That means I can say that if CP is equal to 8 centimeter, then PF is equal to 4 centimeter. That means F is the half of CP. Clear? And radius of curvature is denoted as R, or we can say that capital R. And this focus, this distance is denoted with F. Now there are some terms which definitions are asked. Number one, what is radius of curvature? The distance between BW means between BETW. Okay, this is the symbolic. The distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. It is denoted by capital. Clear? Now, what is focal length? Is there any problem in spelling? No, no. Okay. What is focal length? Similarly, the distance between pole and focus. Clear? It is denoted by F. Now next heading. What is relation between radius of curvature and focal length? Find focal length if radius of curvature is 20 centimeter. For example, I'll frame a question like this. What is the relation between radius of curvature and focal length? This is the first question. So, the relation between them
center of curvature, sorry, radius of curvature is equal to 2 into focal length. Symbolically, we can write R is equal to 2L. This is a relation. That means if we multiply focal length with 2, we get the value of radius of curvature. Okay, now there's a numerical. Find focal length if radius of curvature is 20 centimeter. In the question we have radius of curvature is 20 centimeter. Now we have a relationship R is equal to 2F. That means we write over 20 here, 2 into F. The value of focal length is 20 by 2. That is focal length is 10 centimeter. Isha, do you understand? Yes, ma'am. Okay. Now there are way diagrams for different mirrors, convex and concave, but I'm not going to explain you because these are in class 11. I just give you a glimpse regarding that. Okay. And before that, I also want to tell you some more questions. Sometimes they also ask uses of convex mirror. There are two types of mirror, convex and concave. Okay. So uses of convex mirror and uses of concave mirror. Sometimes they are asked. I will give you two uses at least. Uses of convex mirror and concave. Write down convex mirror. It is used as a rear view in automobiles. And concave mirror, they are used as reflectors in headlight of car. There's one more use. They are used as shaving mirror. I think it's enough. Now, next thing, I'm going to tell you mirror formula. We are discussing the topic of mirror. So there is a mirror formula. In order to calculate focal length, image and object distance. Mirror formula is 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v. Its derivation is not asked in class 12, so I'm not covering that portion. So this is the mirror formula, where f is the focal length of the mirror, u is the object distance, and v is the image distance. When you're done, say, then I will explain you sign conventions. Done, ma'am. Okay. Now sign conventions. Listen care. ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लीजिए कोई मिरर,
कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ये पोल है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने कैंडल जला दी, ठीक, तो इस पोल से ये कैंडल जो है इसकी हमें इमेज मिलेगी, मतलब कहीं पर तस्वीर मिलेगी। तो ये सामान रखा है इस शीशे के आगे, तो ये मेरा कहलाएगा ऑब्जेक्ट। और इस पोल से जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ये सर आपका मिरर ज्वाइन कर रहा है, इस पोल से इस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, इसका जो ठीक हाफ होगा, आधा, यहाँ पर आपका फोकस होगा, ठीक है। अब इस पोल से इस सी तक का जो डिस्टेंस है ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी आर। इस पोल से इस फोकस तक का आपका डिस्टेंस फोकल लेंथ है, स्मॉल है, ठीक है। अब हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे। ये डिस्टेंसेस आपको समझ में आ गए। अब हम रे डायग्राम बनाने के लिए डिस्टेंसेस को रफ करेंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। इधर लाइट ऐसे चलेगी, ठीक है, और ऐसे फोकस से गुजर जाए, मतलब इधर से गई और इधर से आ गई बाहर, मिरर के केस। फिर लाइट मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट जाती है तो उसी से वापस चली जाती है। यहाँ पर दोनों लाइट क्रॉस कर गई नीचे, तो ये कैंडल इस तरीके से इसकी उल्टी पोजीशन बन गई, तो यहाँ पर इसका फोटो बना इसी कैंडल का। तो ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे इमेज, यहाँ पर इसका फिगर बन, ठीक है। तो अब इस पोल से इस इमेज तक की जो डिस्टेंस होगी उसको कहेंगे इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये फोकल लेंथ है, ये एफ से डिनोट करते हैं, क्लियर। तो हमने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया 1/f 1/u प्लस 1/v, इसमें u भी आ गया, v भी आ गया, f भी आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई। अभी इसमें एक चीज और है, मैंने हेडिंग डाली है साइन कन्वेंशन। अभी हम साइन कन्वेंशन बताने चाहते हैं कि अभी और भी चीज है थोड़ा सा। देखो हम लोग मैथ्स में नंबर लाइन पढ़ते हैं, उसमें ये 0 होता है, इधर तरफ सब माइनस होता है और इधर सब प्लस होता है ना मैथ्स में। तो ये जो मिरर जा रहा है आपका, इसको आप 0 मान लो, इसको आप क्या मान लो, 0, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर इस तरफ आएगी तो सबके आगे हम माइनस लगाएंगे, और कोई चीज अगर इस तरफ आ जाएगी तो उसके आगे क्या लगा देंगे, प्लस। ओके, हाँ। तो ये तुम्हारा जो मैंने मिरर बनाया है ये कॉनकेव है, ठीक है। ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मैंने फिगर आपको दिया है कॉनकेव कॉन्वेक्स का। तो आप ये यू देखिए, मिरर के इस तरफ है ना, हाँ, तो यू के आगे क्या लगेगा, माइनस में। इधर वी भी इधर ही बन रहा है तो माइनस में, और एफ भी इधर ही बन रहा है तो क्या हो गया, माइनस। कुछ समझ में आया। हाँ। अब अगर मैं कुछ ऐसा फिगर बन जाए कि उस तरफ बन जाए, है ना, कोई ऐसा केस बन जाए कि उस तरफ बन जाए, तो ऐसा केस जैसे मैं आपको बनाती हूँ फिगर में, मान लीजिए आपका ये मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। अभी क्या है, सेंटर कर्वेचर है, इसका ठीक ठाक ये फोकस है, वेट, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल।
अभी मान लो मैंने कैंडल इस फोकस के आगे रख दी, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में, तो क्या होगा कि इसका लाइट ऐसे मिरर पे पड़ेगा और ये फोकस से चला जाएगा, और इसका लाइट ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा और ये ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन ये दोनों मिलेंगे नहीं। तो क्या होगा कि ये ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं, और ये देखा गया कि यहाँ पे कहीं ये बनता है वर्चुअली, रियल में नहीं मिल रहा है, ये डॉटेड का मतलब वर्चुअली। तो इसका इमेज यहाँ बना इधर, क्योंकि जहां पे मिलेगा वही इमेज बनेगा, तो ये इमेज बना। अभी यहाँ पर देखो, फोकल लेंथ इधर है, ऑब्जेक्ट ये रहा, तो u इधर आपका माइनस f माइनस, लेकिन ये v आपका क्या हो गया प्लस। मतलब कोई भी चीज मिरर के राइट हैंड साइड पे बनेगी तो हम उसको प्लस लेंगे, और कोई भी चीज मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी तो हम माइनस लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट साइन कन्वेंशंस, अभी वो तो रह गया, अभी वो शुरू करते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है, मतलब ये कुछ रूल है कि जैसे मान लीजिए ये एक मिरर है आपका, हेलो, हाँ हाँ, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका एक रूल है कि अगर कोई कैंडल रखी हुई है, ठीक है, अगर उससे कोई लाइट इसके पैरेलल जाती है, ये लाइट पैरेलल जा रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो लाइट जब इस मिरर से इंटरैक्ट करेगी, इस मिरर पे पड़ेगी, तो उसके बाद वो फोकस से जाएगी हमेशा। अगर कोई लाइन ऐसे पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से लौटेगी। दिस इज द फर्स्ट फाइन कन्वेंशन रूल। ओके, मेक दिस फिगर, व्हेन अ लाइट फॉल्स पैरेलल right down to principal axis, it passes through focus. Done. Now the second rule. अब अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी ऐसे, तो यहाँ पे पड़ी तो फिर इसी रास्ते से लौट जाएगी। When a light passes through center of curvature, it goes back on same path. This is the second convention. Okay. Now write the third one. मान लीजिए अब ये कोई कैंडल यहाँ रखी है और अब इसके आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर तो है, तो लाइट सीधा फोकस से चलेगी, तो फोकस से जब गई तो फिर वो वापस पैरेलल चली जाए। देन ए लाइट लिखते जाइए, व्हेन ए लाइट goes from focus, it return back parallel to principal axis. These are the three sign conventions. Write down.
Done? Done? Finished? Finished? Now next one, magnification. Are you there? Done? Yes, ma'am. Yeah, magnification. Now what is magnification? In order to understand magnification, I want to give you an example. कि अभी हम सड़क पर खड़े हुए हैं, तो हम कोई कार देखते हैं तो हमें वो खूब बड़ी सी उसकी अपने रियल शेप और साइज में दिखाई देगी। लेकिन अगर हम किसी ऊपर बिल्डिंग बिल्डिंग में चढ़ जाएं, 14-15 ऊपर बिल्डिंग पर, वहां से उसी सेम कार को देखेंगे, इट लुक्स लाइक ए स्मॉल कार। क्लियर? सो देयर इज अ change in shape and size when we look that object at a distance. जब किसी चीज को किसी दूसरी जगह से देख रहे हैं तो वो हमको थोड़ी छोटी बड़ी आंखों में दिखाई देती है। That property is known as magnification. Okay? So what is magnification? The definition of magnification, write down. And magnification is very important. Don't leave it. इसको याद कर लीजिएगा बेटा. The ratio of height of image to that of object is called magnification. That means its formula, it is denoted by M. Its formula is height of image over height of object. We can write it as HI, image, HO, object. Okay? There's one more formula for magnification in terms of U and V. Magnification is also equal to minus image distance from the pole over object distance. But in this case, we also have to put minus sign over here. That is minus V by U. These are the two formulas by which we solve the numericals related with magnification. Moreover, there are some tricks. कभी कभी पूछ लेते हैं कि अगर इसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, इमेज कैसी होगी. राइट दैट थिंग. नोट. If mod of magnification is greater than 1, image is magnified. Magnified means बहुत बड़ी image बनेगी. If magnification is less than 1, image is diminished. If magnification is equal to 1, size of image is equal to size of object. जितना बड़ा वो ऑब्जेक्ट होगा, ये कैंडल होगी, उतनी बड़ी इमेज बनेगी. अगर उसकी वैल्यू 1 होगी, अगर 1 से कम है तो वो डिमिनिश्ड है, 1 से ज्यादा है तो बहुत बड़ी बनेगी. Moreover, there are two more things. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि if value of m is positive, कोई जरूरी नहीं है 1 2 हो, लेकिन पॉजिटिव हो, तब इमेज is virtual and erect. If magnification is negative, image is real and inverted.
These are very important points you must remember. Okay. Now I am going to solve a numerical in order to give the concept regarding this. Okay. Write down a numerical. An object is placed 10 centimeter in front. Find out the. Huh? Find out the. An object is placed. अच्छा तब ना मैम बोर्ड नहीं आ रहा था मतलब पहले वाला ही था अभी आ गया An object is placed 10 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Find focal length, image distance, magnification, nature of image. With the help of this numerical, I want to give you the glimpse. Okay? How we will solve the different numericals. Now listen carefully and just watch the blackboard for some time. An object is placed 10 centimeter in front of a concave mirror. Firstly, we search which type of mirror is there in our question. There is a concave mirror. Now write assumptions for concave mirror. For concave mirror, object distance U is always negative. Focal length F is always negative. And image distance we have to find. We can't say whether it is positive or negative. This is a trick with the help of which we can solve different numericals. Okay. Now, it is placed 10 centimeter in front of mirror. That is 10 centimeter is the object distance. So we can write it as minus 10. Okay. Now, radius of curvature is 15 centimeter. Focal length is not given to us. Radius of curvature is given to us. Radius of curvature, that is 15 centimeter. Firstly, we have to find focal length. Now, what is the formula? R is equal to 2F. I told you earlier. So, we use this formula in order to find the focal length. Now, first part of the question, we have to find focal length. We have a formula R is equal to 2F. Okay. Now, radius of curvature is 15 and 2F. So, value of F is 15 by 2 centimeter. But in case of concave mirror, focal length is negative. So, focal length is minus 15 by 2 centimeter. Okay. So, this question number 1, focal length is done. Now, image distance. Now, we have a formula 1 upon F, 1 upon U plus 1 upon V.
This is the mirror formula. Now 1 upon f is minus 15 by 2. 1 upon u, 1 upon minus 10 plus 1 upon v. Image distance means v. We have to find v. Okay? Hmm? Now see over here. 2 goes in the numerator. 2 over minus 15. 1 upon minus 10 plus 1 over v. We move this over side. 2 minus 15 plus 1 by 10 is equal to 1 by v. Any problem? Any problem? Hmm? No. We take LCM minus 15 into 10. Here 2 into 10 plus 1 into minus 15 is equal to 1 over v. That is 20 minus 15 minus 15 into 10 is equal to 1 over v. That is 5 over minus 15 into 10 is equal to 1 over v. Clear? Now be careful at this step. This is 1 over v. So we reverse it. It becomes v is equal to minus 15 into 10 over 5. 5 3s are 15. So v is equal to minus 30 centimeter. So image distance is minus 30 centimeter. Clear? Yes. Okay. Now third one, magnification. Now magnification. Formula for magnification, m is equal to minus v upon u minus v minus 30 u minus 10. Clear? Hmm? Yes, sir. So what happened? Minus minus get cancelled. It becomes minus 30 by 10. That is minus 3. Okay? Yes. Now, fourth one, nature of image. Okay? अभी अपने मैग्निफिकेशन में लिखवाया है ना, देखो इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, देखो लास्ट में क्या लिखाया है मैंने उसमें, आप देख के बताओ. Magnification image is real inverted magnified. Okay? Because it is minus 3. We get the value of negative magnification. In the last I have told you. Okay? Yes, sir. Now, ये पूरा clear हो गया. Now I am shifting to the next numerical on the convex mirror. Clear? Hmm? Now, for example, I will take the same numerical but for the convex mirror. An object is placed
10 centimeter in front of a always near a radius of curvature 15 centimeter. Find again focal length, image distance, magnification, and nature of image. The same pattern I have taken, but now the mirror is convex mirror. Okay. Hmm? Now, can you tell me what is 10 centimeter? What is 10 centimeter, which is given in your question? An object is placed at 10 centimeter. So, what is 10 centimeter? What type of distance? Object distance. Let's write down again. For convex mirror, object distance, that means U, always negative. Focal length, F, that is for image distance, V, we have to find. Okay. Now, object distance is 10 centimeter. So, we write minus 10. Okay. Hmm? Now, again, it is radius of curvature. So, we have to find focal length. Now, how will you find focal length? R is equal to 2F. That means 15 is equal to 2F. So, F is equal to 15 by 2. Okay. But here it is positive. In case of convex, it is positive. So, we write plus 15 by 2. Be careful at this point. Okay. Now, we have to find image distance. We have to find image distance. That means 1 upon f, 1 upon v, 1 upon u. 1 upon 15 by 2, 1 upon v we don't know, 1 upon u, 1 upon minus 10. Clear? We substitute all the values. Now again, u minus 10, f plus 15 by 2. 2 goes in numerator, 1 upon v plus 1 upon minus 10. We take this over left hand side plus 1 by 10, 1 by 3. Now again 15 into 10, 2 into 10 plus 1 into 15, 1 by 3. So it becomes 20 plus 15, 15 into 10, 1 by b. 35, 15 into 10, 1 by b. Okay? So v becomes 15 into 10 over 35. 5 2s are 10, 5 7s are 35.
15 to the 30 by 7. This is V. Okay, centimeter. Now the value of V becomes different and it is plus 30 by 7. Okay. Now magnification. Minus V by U minus 30 by 7 over minus 10. Clear? Because the value of mu is minus 10. Minus 30 by 7 into 10 and minus. Both get cancelled. 0 get cancelled. So magnification is 3 by 7. That is my 0.74 are 20. Approximately less than 1. That means magnification is less than 1. 0.4 is less than 1. And magnification is positive. Now check out in your notebook, when magnification is positive, what happens? Image is virtual and erect. Now you understand what is the value of these tricks? Okay, Isha. May I end the lecture today?